मेरा नाम नवीत है और मैं ब्रिज डिवीज़न CRRI में एज ए साइंटिस्ट काम कर रही हूँ। इस लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे ब्रिज क्लासिफिकेशन और उन्हें सेलेक्ट करने का, व्हाट टाइप ऑफ ब्रिज वी शुड बी सेलेक्टिंग, उसे सेलेक्ट करने का क्राइटेरिया वी शुड बी ऑप्टिंग फॉर। ये एक ब्रीफ आउटलाइन है जो कि हम इस प्रेजेंटेशन में फॉलो करेंगे। सबसे पहले हाउ द ब्रिजेस वर इवॉल्व्ड वर्ल्ड ओवर एंड देन स्पेसिफिकली इंडिया में किस तरह से उनका कैसे एवोल्यूशन हुआ और डिफरेंट ब्रिज क्लासिफिकेशंस। अभी ब्रिज क्लासिफिकेशन अगर हम देखें तो देयर आर डिफरेंट वेज, बहुत डिफरेंट तरीके से ब्रिजेस को क्लासीफाई करके अलग अलग बुक्स में भी दिया है, बट वी विल बी फॉलोइंग IRC 5, so we'll be following the classification as per the IRC 5 code और then उसके बाद उन्हें select करने का criteria and then little bit I'll be touching upon the foundation और foundation select करने का criteria. Evolution of bridges. Now जब bridge as such एक word bridge भी नहीं था तो I would ask you, what was the thing which might have motivated the mankind to develop something like a bridge? So we'll keep this session very interactive so that everybody can participate because दो reasons हैं, topic भी बहुत easy है और इसमें बहुत सारा information भी नहीं है आपको देने के लिए कि you will get bombarded with so many equations and so much of information. So we'll keep it very interactive, है ना? So anybody? मतलब ब्रिज एज सच ब्रिज नहीं बोला जाता था, ब्रिज वर्ड ही नहीं एग्जिस्ट करता था। तो व्हाट वाज द फर्स्ट थिंग विच माइट हैव एक्साइटेड द मैनकाइंड टू बिल्ड समथिंग लाइक अ ब्रिज? हाँ, आई डोंट हियर दैट। हाँ, दैट इज द थिंग, बट क्या देख के उसे आइडिया आया कि ओके लेट्स मेक अ ब्रिज? क्या क्या देख के कुछ आइडिया आया कि एक ब्रिज बनाते हैं? ऐसे वाइल्ड गेस कुछ भी? हाँ, एग्जैक्टली, सो एग्जैक्टली दैट वाज द फर्स्ट थिंग। एक ट्री, प्लैंक या कोई लकड़ी पानी के ऊपर गिर जाता है या कुछ ऑब्स्टिकल के ऊपर गिरा है और दैट माइट हैव एक्साइटेड द मैनकाइंड और मे बी just to build something like a bridge, है ना? और natural bridges, rock के bridges जो कि self made थे, naturally built थे, उन्होंने भी they might have also contributed and motivated to build something like bridges, what we call today bridges. अच्छा, अभी एक छोटा प्लांक था और अगर हमें उसका कैरेज वे, उसका विड्थ इंक्रीज करना है तो they might have thought कि चलो ज़्यादा प्लैंक्स लगा देंगे, हमारा कैरेज विड्थ बढ़ जाएगा। इवन मोर हाउ कि प्लैंक को फ्लैट कर देते हैं, चलने में इजी रहेगा। स्लोली स्लोली थिंग्स वर इवॉल्विंग एंड देन स्टार्टेड एक्चुअली द ब्रिजेस विच वी नाउ सी। ये ब्रिज है आर्किड्यूको ब्रिज विच इज़ इन ग्रीस। ये माना जाता है कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में है कि ये 3000 ईयर्स ओल्ड ब्रिज है जो कि आज भी एग्जिस्ट करता है और पेडेस्ट्रियन के लिए ये यूज़ किया जा रहा है। उसके बाद एक अनदर ब्रिज है टर्की में, कैरावन ब्रिज, दैट इज़ ऑल्सो क्लेम्ड टू बी 3000 ईयर्स ओल्ड। रोम के इंजीनियर्स थे, दे आर टिल डेट एंशियंट टाइम्स में जो उन्होंने ब्रिजेस बनाए हैं उनके वो इंजीनियर्स आज भी माने जाते हैं। अपने ब्रिजेस जो भी उन्होंने उस टाइम में कंस्ट्रक्ट किए थे, आज भी उनमें से कुछ ब्रिजेस एग्जिस्ट कर रहे हैं एंड दे आर स्टिल इन यूज़। देन टिल 1800 पहली बार फर्स्ट कास्ट आयरन ब्रिज बनाया गया इंग्लैंड में और उसके बाद रॉट आयरन ट्यूबुलर ब्रिज इन 1850 बनाया गया और ट्रस ब्रिजेस ड्यू टू मैकेनिक्स ऑफ डिज़ाइन ये जब डेवलप हुआ तो हमें समझ आया कि हम आयरन जो हमें रॉड्स या मेंबर्स मिल रहे हैं उनको एक पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन में लगाएंगे तो हमें बेटर स्ट्रक्चरल डिज़ाइन प्रॉपर्टीज़ मिलेंगी। तो उस तरह से ट्रस ब्रिजेस केम इनटू एग्जिस्टेंस
And then suspension bridges. Suspension bridges also they came up in 1920 AD. So here they started the use of steel for suspending cables. So that's totally a different kind of way where we are using a material in a different way so that we can go for even longer and longer spans. Pre-stressed concrete और steel उसके बाद आया. इंडिया में अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो रूट ब्रिजेस इन मेघालय ये माने जाते हैं ये बहुत पुराने 500 इयर्स ओल्ड के करीब इनकी हिस्ट्री है और इवन आज की डेट में भी कुछ ट्राइब्स ऐसे हैं विच आर ट्राइंग टू रिजर्व देम एंड दे आर ट्राइंग टू स्टिल बिल्ड देम बिकॉज एक ब्रिज बनाने में भी तकरीबन अराउंड 100 इयर्स कंप्लीट लग जाते हैं एक कंप्लीट ब्रिज तैयार होने में बट इसकी लाइफ बहुत ज़्यादा होती है बट ऑफ कोर्स some people also argue whether we can call them as a bridge or not, but yes, we do call them. Arthnala Bridge in Odisha was built in 13th century. Naini Bridge 1927 में बनाया गया और केरला में Muvattupuzha Bridge in India 1914 में बनाया गया पहला concrete bridge. Bridge classification. IRC 5 में ये क्लासिफिकेशन बहुत एक्सटेंसिवली दिया गया है सो हम इसे वन बाय वन कवर करेंगे. सो द ब्रिजेस आर फर्स्ट क्लासिफाइड एज पर देयर फंक्शन देन लेंथ फॉर्म ऑफ सुपरस्ट्रक्चर सिस्टम ऑफ सुपरस्ट्रक्चर एंड मटेरियल कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी लेवल ऑफ द ब्रिज इम्पोर्टेंस इन सबको हम एक एक करके देखते हैं. सबसे पहले अगर एक ब्रिज पानी के ऊपर है सो विल कॉल इट एज ब्रिज ओवर स्ट्रीम और अगर वो ड्राई लैंड पे है सो दैट इज कॉल्ड वायाडक्ट. रोड ओवर ब्रिज अगर एक रेफरेंस रेलवे ट्रैक अंडर द रेफरेंस रोड जा रही है दैट्स कॉल्ड द रोड ओवर ब्रिज ROB. और अगर रेलवे ट्रैक आपकी ऊपर जा रही है और रेफरेंस रोड फॉर टेकिंग द ट्रैफिक नीचे से जा रहा है दैट्स कॉल्ड road under bridge. Foot-over bridge we all know for the pedestrian use. Overpass, if we are building a road to cross a reference road, that's overpass and underpass is going under the reference road. Flyover, now as the name suggests, we are actually flying over the traffic to increase the speed. Or maybe without traffic light, if we wish to go something like that, so flyovers. Subway, to cross a particular road under the road beneath its reference road, subway. Grade separators. So this helps us in making some kind of arrangement which is combination of different overpasses and underpasses where the traffic is moving at different levels. So that's the grade separator. Length के basis पे जो classification किया गया है कल्वर्ट्स लेस देन 6 मीटर्स उन्हें कल्वर्ट्स कहा जाता है और ब्रिजेस आर द स्ट्रक्चर्स विच आर हैविंग लेंथ मोर देन 6 मीटर्स दे आर ब्रिजेस. माइनर ब्रिज लेंथ अप टू 60 मीटर्स और मेजर ब्रिज मोर देन 60 मीटर्स. फॉर्म ऑफ सुपरस्ट्रक्चर सबसे पहले है आर्च ब्रिज. आर्च ब्रिज में लोड कैसे ट्रांसमिट होता है आपका रेफरेंस रोड के ऊपर ट्रैफिक चलेगा that load will be transferred to the arches of the bridge through these cables. So these cables will be in tension and they will be transferring the force in the arch in the form of compression. And those forces from the arch will actually go in the substructure, pier or abutments. So your pier and abutments should be capable of taking these inclined loads. जो उसमें इंक्लाइंड लोड थ्रू द ट्रस का एंड है जो ट्रस के एंड पे यहाँ it should be these piers should be and the abutments should be able to take the inclined forces which are coming onto them. Solid slab जब स्पैन हमारा छोटा रहता है then this is actually the simplest form of bridges जिसमें फॉर्म वर्क भी बहुत easy है reinforcement detailing भी बहुत easy है. So this is the easiest bridge type which we generally go for if the span is small. But जैसे जैसे span आपका increase करता है
एक सॉलिड स्लैब देना अनइकोनॉमिकल हो जाता है, बिकॉज उसकी स्लैब की जो डेप्थ है इट विल बी टू मच, तो हमारा डेड वेट्स बहुत इंक्रीज कर जाएंगे. उस केस में वी समटाइम्स गो फॉर वॉइडेड स्लैब ब्रिजेस, T-beam bridges. So this is actually a slab and a beam, and which is giving us a T-beam bridge. So it has a thin slab on its top and a very comparatively deep beam girders. We are calling them girders. So T-beam bridge. Next is the cable stayed bridge. जब स्पैन हमारा ज़्यादा हो जाएगा तो then we have to go for cable stayed bridge. इसमें जब हमारा ट्रैफिक रोड पे चल रहा है, थ्रू दीज स्टिफ स्ट्रेट केबल्स, द लोड विल गो टू द पाइलॉन एंड अल्टीमेटली टू द फाउंडेशन. सो दैट्स हाउ द फोर्स विल बी ट्रांसफर्ड इन द फाउंडेशन. केबल ब्रिजेस की अनदर टाइप है सस्पेंशन ब्रिज, जिसमें लोड ट्रांसफ़र लिटिल बिट डिफरेंट है आपका केबल ब्रिजेस से. इसमें हमारे जो डेक के लोड हैं, दे विल फर्स्ट गो टू दीज केबल्स विच आर कर्व्ड थ्रू दीज सस्पेंडर, थ्रू दीज वर्टिकल केबल्स इट विल गो टू दी कर्व्ड केबल एंड देन अल्टीमेटली इन द टावर एंड देन दी फाउंडेशन. बॉक्स गर्डर्स आजकल बहुत कॉमन है, बिकॉज अगर हमें स्पैन और भी इंक्रीज करना है, then box girders are actually economical. Generally we do it with segmental construction. अभी आपका अगर carriage width ज़्यादा है, then we sometimes go for twin or multi-cell boxes. Truss bridges, इसमें हमारा जो superstructure रहता है, it does not take any the members, they do not have any movements as such, they only take the load through the axial forces. एक्स्ट्रा डोज ब्रिजेस अभी आजकल काइंड ऑफ रिलेटिवली नया टाइप है, जो कि दिल्ली में, वैसे इंडिया में अभी हम लोग काफ़ी इसे यूज़ करना शुरू कर दिया है. सो एक्स्ट्रा डोज ब्रिज जो है, ये हमारा केबल स्टेड ब्रिज और प्री स्ट्रेस्ड ब्रिज का कॉम्बिनेशन है. समटाइम्स हमारे पास केबल स्टेड ब्रिजेस में हमारा स्पैन बहुत बड़ा रहता है और प्री स्ट्रेस्ड ब्रिजेस का काइंड ऑफ लिमिटेड है. सो इन बिटवीन अगर आपको कुछ एक स्पैन बनाना है, ब्रिज बनाना है मीडियम स्पैन का, so there we go for extra dose bridges. इसमें जो आपको केबल्स दिखाई दे रहे हैं, ये एज सच केबल स्टेड वाले केबल्स नहीं हैं. सो ये जो आपके केबल्स हैं, they are actually the pre-stressed cables which are coming out of the deck and going to the pylon. Okay, next classification is based on the support of the superstructure. Simply supported, जिसमें डिफरेंट आपस में दो स्पैन्स का एज सच कोई रिलेशन नहीं है, दे आर कनेक्टेड विद एन एक्सपेंशन जॉइंट. देन द कॉन्टिन्यूस ब्रिजेस, जिसमें हमारे 2 या 3 स्पैन्स पे पूरा स्पैन रन करता है विदाउट एनी एक्सपेंशन जॉइंट, मे बी आफ्टर 2 to 3 स्पैन्स इट विल कम. देन इंटेग्रल ब्रिजेस, आजकल दे आर ऑल्सो रिलेटिवली न्यूअर टाइप ऑफ ब्रिजेस विच आर एक्चुअली वेरी लो ऑन मेंटेनेंस. आई वुड से मेंटेनेंस की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा ब्रिजेस के अंदर कॉस्ट आता है एक्सपेंशन जॉइंट्स की मेंटेनेंस और बेयरिंग्स का मेंटेनेंस. अगर आप सिंपली सपोर्टेड ब्रिजेस में जाते हो तो आपके बेयरिंग्स हैं, एक्सपेंशन जॉइंट्स दोनों हैं. कॉन्टिन्यूस जाते हो ब्रिजेस में, कंपैरेटिवली उससे कम है. बट इंटेग्रल ब्रिजेस इसलिए आजकल फेमस हो रहे हैं बिकॉज इसके जो जॉइंट्स हैं सच, दे आर ऑन द अबटमेंट एट वन एंड ओनली. It is continuous throughout the length of the bridge. Now how temperature is taken care? That's actually temperature effects are taken care by the last joint which is at the abutment end. Support of the superstructure. So cable supported, under which cable stayed and suspension bridges come. This we have covered. Then balanced cantilever. बैलेंस कैंटिलीवर सपोर्ट सिस्टम में बड़ा इसका कंस्ट्रक्शन बड़ा ड्रामेटिक कंस्ट्रक्शन होता है. सो व्हाट वी डू इन दिस काइंड ऑफ ब्रिज इज दैट फर्स्ट द पियर इज कास्टेड एंड देन द आर्म्स ऑफ द स्पैन आर कास्टेड टुवर्ड्स ईच अदर.
So slowly the two arms of the one pier, actually the cantilever, you can say the cantilever arms, they balance out each other. So one by one, idhar, and then they join in the mid of the span. Material based classification, masonry bridges, ये बहुत सारे हेरिटेज ब्रिजेस जो हमारे हैं वो लार्जली मेसनरी ही हैं. Then reinforced, very common type of material used for the bridges, and pre-stressed concrete bridges, ये भी बहुत आजकल common ही है, I would say. Then fiber reinforced concrete bridges have also coming up, though not in India, but there is an example, floodway bridge in Canada, which has used only GFRP, glass fiber reinforcement, above the girder levels. So girders में तो जो steel है वो reinforcement ही है, steel reinforcement, लेकिन girder से ऊपर slab or whatever members of concrete are there, they are using a GFRP. Then steel in the truss bridges and composite bridges, जिसमें हमारे girders will be of steel and deck slab of concrete. Timber bridges अभी आजकल बहुत common नहीं है. Construction type based classification, cantilever construction हम already cover कर चुके हैं. Span by span construction, so maybe sometimes in concrete also or largely in steel we go for span by span construction technology. Segmental construction technology, this is very common because it is easy and economical. ये वीडियो है टू शो यू इंक्रीमेंटल कंस्ट्रक्शन. It's not working. Okay. Anyways, I'll maybe show you later if we have time. Level based. I think since morning we are having the doubts related to hydraulics, HFL. Hydrology. So this is a type of bridge which I believe you all are very much interested in. HFL, high level bridges which are where the road level is supposed to be above the HFL level, and there are submersible bridges where the road is supposed to get submerged in the water if there are a lot of floods. Overtopping of during the flood is allowed in these type of bridges. ये हम जनरली प्रोवाइड करते हैं जहाँ बहुत ज़्यादा फ्लड्स होते हैं और मे बी समटाइम्स रिवर अपना कोर्स चेंज कर लेती है. सो इन दोज लोकेशंस वी गो फॉर दिस काइंड ऑफ सबमर्सिबल ब्रिज. Okay, now we have covered the classification. It's a very small trick question for all of you. What do you think this type of bridge is? ये cantilever bridge है या arch bridge है? आर्च है. अच्छा, आर्च वाले कितने हैं? एक बार हैंड रेज करो. ऐसे नहीं, बस आर्च या कैंटिलीवर, एक आंसर देना. अरे अभी तो इतने सब आर्च बोल रहे थे, अभी हाथ खत्म ही हो गए. अच्छा, कैंटिलीवर आर्च है? नहीं, ये कैंटिलीवर ब्रिज है. आर्च ब्रिजेस के लिए इसका जो एंड, जो स्पैन इज सपोज टू रेस्ट इन द एट दिस लोकेशन. ये जो इसका दूसरा, अगर आप पहली फोटोग्राफ देखोगे तो दिस स्पैन इज एक्चुअली मेकिंग इट अ कैंटिलीवर ब्रिज. सो फॉर दिस ब्रिज टू बी एन आर्च ब्रिज, the span ends should be on the like the points which I have shown you here. Convinced? Arch वाले जो थे, balance cantilever. The right word is correct. Balance cantilever. Okay. Selection criteria. Selection criteria में I would start and also end with this same statement that there are so many factors. हाँ जी, yeah.
नहीं, एक्चुअली जो आपका इस एंड पे आपको कैंटिलीवर पोर्शन दिख रहा है, दैट इज नॉट सपोज टू रेस्ट ऑन द सपोर्ट. ये इसकी कंस्ट्रक्शन में ही ये इंश्योर किया जाता है दैट इट इज हैविंग अ कैंटिलीवर एक्शन. सपोर्ट नहीं कर रहे हैं ना, ये सपोर्ट, मैं वही बता रही हूँ कि आपको, पहले मैं आपका क्वेश्चन रिपीट करती हूँ सो दैट वी आर ऑन सेम पेज. आप ये पूछ रहे हो कि ये कैंटिलीवर इज रेस्टिंग एट दिस सपोर्ट, सो मिड में कहाँ सपोर्टेड है? नहीं, हाँ, हम वही बात करें. तो ये कैंटिलीवर स्पैन है ना, ये एक एंड पे यहाँ सपोर्टेड है और दूसरा पॉइंट ये है जो कि कैंटिलीवर है. एज पर द कंस्ट्रक्शन, if done properly, which is done properly, I assume, तो इससे हमें सपोर्ट नहीं करना है लास्ट पॉइंट पे. फ्री है, वो फ्री कंडीशन ही रहती है उसकी. मैडम मैं ये कह रहा हूँ जैसे कैंटिलीवर जो बीम होती है ना अपनी, जिस पर अपन यूडीएल पढ़ते हैं, ठीक है, जब उसका जो एंड सपोर्ट होता है, जब हम उस पर, जब तक वो सपोर्टेड नहीं है तो तब तो उसे हम कैंटिलीवर बोल रहे हैं, ठीक है, जिस पर यूडीएल वाले जो हम क्वेश्चन करते हैं. ठीक है. और जब अपन ने उस पर मान लीजिए सिंपल सपोर्ट कर दिया उसको, तो वो कैंटिलीवर थोड़ी हुई, फिर तो लो ट्रांसफर हुआ ना उस एंड पे. किया नहीं ना, मैं वही तो बता रही हूँ कि हमने उसे सपोर्ट नहीं किया. इसका जो दूसरा एंड है वो फ्री ही है, वो फ्री ही है. जो आपकी रियल कंस्ट्रक्शन में भी ये फ्री ही रहता है. अच्छा, सिलेक्शन क्राइटेरिया में देर आर एक्चुअली so many different factors which end up in deciding what type of particular bridge we should be choosing. But the thing is, in this lecture we will be covering all those factors which I could cover and I could explain to you. But end of the day, again, you will be having this thing that there are so many factors. There is no pinpoint answer for selecting a particular bridge. बट सबसे पहले हमारे पास एक पर्टिकुलर ब्रिज के लिए 3 की पैरामीटर्स रहते हैं, ठीक है. बिफोर सेलेक्टिंग द टाइप ऑफ सुपरस्ट्रक्चर, दीज 3 की पैरामीटर्स हम कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं, वो हम विल सी नाउ. लेंथ, हाइट एंड द स्पैन अरेंजमेंट. एक रिवर ब्रिज के ऊपर अगर आपको लेंथ ऑफ द ब्रिज डिसाइड करनी है, हाउ विल यू डिसाइड? ऑन व्हाट बेसिस वी विल डिसाइड? Width of the lever. So what is it called in technical words? No. Linear waterway, exactly. और okay, linear waterway अगर रिवर पे है वो ब्रिज तो हमें लेंथ उससे डिसाइड होगा. और अगर वैली में है ब्रिज, वैली में ब्रिज रखना है हमें, तो उसकी लेंथ कैसे डिसाइड की जाएगी? ग्रेडियंट ऑफ व्हाट? अच्छा, let me make it very specific. आपके पास एक वैली है, you can see in the slide, वैली है. So this V is actually a very poor drawing of valley. उसमें हमने ये डिसाइड कर लिया कि फाउंडेशन जिस पॉइंट पे रखना है वो हमारा फिक्स है. वो हमने फिक्स कर दिया 2 केसेस में. पहला केस है जिसमें हमने स्पैन ऊपर रखा है. ओके, मैं बोर्ड पे बनाती हूँ. हमें फाउंडेशन यहाँ पे रखनी है, ये हमने फिक्स कर दिया बेस्ड अपॉन सम स्टडीज़. ये डिसाइडेड है कि फाउंडेशन यहाँ रखी जाएगी. तो मुझे ब्रिज यहाँ रखना चाहिए या यहाँ रखना चाहिए? ऑन व्हाट बेसिस वी विल डिसाइड द लेंथ ऑफ द ब्रिज? वेयर विल वी व्हाट? एग्जैक्टली. सो नो, दिस इज द अबटमेंट हाइट. So we have to ensure that this abutment height should be minimum. ठीक है, abutment height के basis पे decide होगा. minimum abutment height रखनी है. height of the bridge decide करने के लिए हमें उसकी approach length इस तरह से decide, approach length के basis पे depend करेगा ये
बिकॉज हमें अप्रोच लेंथ का स्लोप एक पर्टिकुलर रेशियो, एक पर्टिकुलर वैल्यू रखना है एज पर द कोडल प्रोविजन. सो अकॉर्डिंगली डिसाइड द हाइट ऑफ द ब्रिज फॉर द फ्लाईओवर्स. वर्टिकल क्लियरेंस ऑफ कोर्स एंड द नेविगेशनल क्लियरेंस के बेसिस पे हाइट ऑफ द ब्रिज डिसाइड होगा. स्पैन अरेंजमेंट, सुबह हम डिस्कस कर रहे थे स्मॉलर स्पैन और लार्जर स्पैन. हाउ विल वी डिसाइड दैट? अगर आपके पास ऑप्शन है बहुत सारे छोटे छोटे स्पैन्स बनाना या एक लंबा स्पैन बनाना, व्हाट विल बी द डिसाइडिंग फैक्टर फॉर दैट? इकोनॉमी इज ऑलवेज देयर. एंड ऑफ द डे इट्स ऑल मनी. कॉस्ट ऑफ द ब्रिज टेक्निकली. हाँ हाँ, why would you go for longer span? Yeah, these are all contributing factors. You are correct. But I mean, any other? Okay. So everybody wants to go for longer span. Huh? Okay. See, जब हमारे पास बहुत सारे spans बनाने हैं, अगर हम if we are going for more number of spans, the cost of substructure increases. Right? The cost of substructure will increase. But if we are going for a longer span, like you said, the cost of your superstructure will be high in comparison to the other case. So yes, end of the day, we have to optimize the cost for the span arrangement. Like you said, it's the economy. End of the day, it's all money, and span arrangement is finally decided based on that. ISC 54, they have very, clearly mentioned that every bridge has its unique properties, unique conditions. So the type of bridge we should be selecting is based on that particular unique condition. So this question will always be there, that what type of bridge we should be choosing. But in this lecture, we will actually, you can say that we will be covering different factors so that everybody is, and then availability of construction material, technology, and time frame of construction. So design effort is also an important factor to decide the type of the bridge. Sometimes it happens that somebody is more comfortable in a particular type of bridge, then they keep on suggesting that particular type instead of just maybe trying or iterating for even more types of bridges, which may be economical. Some non-technical factors are also mentioned in the code, including the construction technology which is available with the vendors who are going to construct it. Sometimes it happens that one particular type of bridge is suggested and the vendor is having different technology, construction technology, shuttering, all those things. So at the end of the day, they'll change it accordingly. So it's suggested that you go for a survey, you can say, and decide and you limit the number of type of bridges to have economical feasibility alternatives. Okay, so now let's dive down in the different factors which we have been considering, we have been discussing about. Different type of factors are material of construction, span, structural form, and some even other factors. So we will cover all these pillars one by one. Before that is the bridge life cycle I would like to talk about a little bit. So end of the day, like I said, it's all economy. Cost of the bridge should be minimum. So here the cost is bridge life cycle cost. So whenever we are going for a particular type of bridge, the aim is to minimize the bridge life cycle cost.
So how they have tried to explain is that initially when we are just constructing the bridge, there is only cost associated with it, no benefit, so zero benefit. After some time, once the bridge is ready, the bridge will start giving you benefits. So in the lower end, you can see benefits are coming up. But there is a cost of periodic maintenance as well. And after some time, the benefits will slowly increase, and there is a consistent cost of periodic maintenance associated with it. And then after 30 to 40 years, there is a major rehabilitation cost which we might have to do for the bridge. So that is a major cost. And after the design life, like we said, 100 years of the bridge, the bridge will be having just its salvage value and cost for its maintenance. So it may, if it is built nicely and properly, it may keep on giving the benefits later also, but that's still the, this is just to show you how the life cycle cost is associated in a, life cycle cost can be explained for a bridge. So now we have to minimize this, the cost of this life cycle bridge by taking into account the maintenance costs as well, along with the construction cost, etc. So first factor which we will discuss is the material and fabrication. Now different materials out of which the bridge is made: steel, reinforced concrete, pre-stressed concrete. स्टील हम लोग प्रेफर करते हैं लॉन्ग स्पैन्स के लिए, और अगर हमें क्विक कंस्ट्रक्शन करनी है दैट इज़ प्रेफर्ड देयर. और जहाँ फटीग आ रहा है, रेलवेज़ में मोस्टली जो हमारे ब्रिजेस रहते हैं वो स्टील के रहते हैं, बिकॉज it is good to take the fatigue loads. Fatigue, I assume everybody knows that. The repetitive loads, where the bridge is going to go in compression, tension. So this kind of load is there, that's the fatigue. Reinforced concrete bridges, most economical for small spans, less than 25 meters. Pre-stressed concretes में हम comparatively medium spans में जा सकते हैं, 25 to 45 meters. They are economical as compared to steel structures. Material choice actually end of the day depends on the cost of the material in that particular bridge site. Span. Actually, I believe span is the first criteria to choose the type of superstructure. So, we should be having some figures in our mind for a particular span. This type of bridge is suitable. Then later after that, उसके बाद बहुत सारे जो और factors हम आगे discuss करेंगे, they'll actually add up. So ये जो list है, ये भी हमारी code में IRC 54 में ही given है. तो इन्होंने बड़ा अच्छे से different span lengths के लिए type of bridges को recommend किया है. So that is the first, I would say, the first criteria to start with for selecting a bridge type. अच्छा, इस table को I have tried to summarize in small spans, less than 15 meters. Go for culverts, slab bridges, T-beam, precast concrete box, precast concrete I-beam or rolled steel beam. Medium span, 15 to 50 meters तक, precast concrete box, composite rolled steel beam, composite steel plate girder, cast in place RCC, cast in place post tensioned, and of course the list is, we'll be sharing this presentation with you. Cost versus span length, एक rough estimate बनाया गया है. As such, this is just, I would say, एक thumb rule ही है ये. अगर आपका superstructure का cost is about 25% of the total cost, then you go for shorter spans for more cost-effective configuration. अगर आपका superstructure की cost 50% of the total cost रहेगा, then go for longer spans. एक thumb rule है which can be followed or kept in mind. Shallow waters में substructure is inexpensive. Shallow waters,
substructure is inexpensive as compared to the superstructure. Of course, you don't have to go deep down for the foundations. अच्छा, आर्च ब्रिजेस के लिए एक अगेन थंब रूल है कि फॉर इकोनॉमिकल डिज़ाइन मेसनरी आर्च ब्रिजेस में जो आपका स्पैन है अगर वो 2 times द हाइट रहेगा इट विल बी इकोनॉमिकल, और आरसीसी स्लैब ब्रिजेस के लिए इट इज़ स्पैन शुड बी 1.5 times द एज. स्ट्रक्चरल फॉर्म सुपरस्ट्रक्चर. सबसे पहले स्लैब ब्रिजेस आर रिकमेंडेड अप टू द लेंथ ऑफ 9 मीटर. वॉइडेड स्लैब्स में हम 9 to 15 मीटर्स जा सकते हैं. जहाँ बेड्स कवर निग्लिजिबल है और फाउंडेशन की कॉस्ट कम आएगी, अगर हमारे शेलो राफ्ट फाउंडेशंस हमने देनी है, देन गो फॉर दी स्लैब ब्रिजेस. स्लैब बॉक्स cell bridges are either square or nearly square. For economy, it is suggested to go for square box cells. Slab bridges में हमारी जो thickness है that is generally 200 to 400 mm. But voided slabs में that thickness may increase up to 650 mm as well. Arch bridges, you see, curved shape of the arch bridge makes it economical. Can anybody tell me why? This is a very basic structural. हाँ, very good. Yes. Somebody else was also speaking something. Huh? Okay, हाँ. So yes, it is because bending moments on arch is under compression. So it has the advantage of not taking the bending moments. It reduces the bending moments, I would say, and it becomes an economical option. Spans can be longer than the beam or truss bridges in arch bridge. For classic arch bridges, generally concrete is preferred, but conventional arch bridges, they have fabrication and erection costs associated with it, because while we are constructing the arch, we have to maintain the arch action. Erection is easiest for the cantilever arch and most difficult for the tied arch. It is not suitable when the abutment foundations are susceptible to large movements, because arch is going to give the inclined thrusts on the substructure. So if the foundation is having large movements, then it is not suitable. Truss bridges, it provides us economy in material and reduced dead weights. Normal eye girders में हमारा what we call it as solid web girder रहता है. Solid web girder, if you see here. But arch bridges में, since it is open web system, so we can go for larger depths and larger spans in case of truss bridges. And since it is built up with smaller elements which can be joined together at the site itself, so easy to transport. Then clearance. In this type of bridge, if we are providing a through bridge, so there is no issue of clearance. But if you have to go for the this kind of a bridge, which is where the I think we call it Pratt bridge. So in this case, the clearance is an obstruction. Comparatively, in comparison to other types of bridges, it has lesser aesthetic appearance in comparison to other bridges. But there are some good truss bridges as well, but it's subjective actually. And yes, since it is steel, so high maintenance and fabrication costs are associated with it. Beam and girder bridges. These are the most constructed and the most basic design, I would say, the girder bridges. So it can go for short to medium spans, less than 75 meters.
I-beam and box girders are the most common type of bridges, girders. Material, RCC, PSC, steel, composite. Now, if we are comparing whether we should go for a cable stayed or a suspension bridge or a girder bridge, these are the three factors based on which we can decide. So for deep foundation, if you have deep foundations are required from cover, अगर हमें deep foundations देने पड़ रहे हैं, then I girders can be selected. Navigational clearance और freeboard clearance अगर कम मिल रहा है हमें, कम है, तो हमें girder bridges select करेंगे और narrow valleys where good rock is available on both the ends, go for girder bridges. Pre-stressed PSC I girders में 25 meters तक we can go for this, and PSC bulb Ts we can go for 15 to 35 meters. Then PSC double Ts, here we can go for the PSC box girders. The span should be less than 25, I mean up to 25 meters we can go for the PSC box girders. Plate girders, where the girder is actually of steel. What are the advantages of plate girders? So somebody was asking this question in the morning, when do we select a composite bridge? So if we have, I mean, there is an option of going for a longer span in the case of composite bridges. Curved plate girders, comparatively, if you compare it with the concrete I girders, you can go for curved plate girders as such, because the curve is possible in case of steel. Better clearance for longer spans, because you will have less depth. I mean, for a particular span, if one particular span, if you compare these concrete girders in comparison to plate, you will have lesser depth, so more clearance, you can say, you will get. So these are the advantages. Then disadvantages, yes, maintenance cost is associated with this because of corrosion. So you need to paint them regularly to maintain them, and they are more expensive in comparison to PSC girders. Economical spans for I-plate girders. For a constant depth, we can go up to 75 meters, and for variable depth, 135 meters. Suspension bridges. These are very elegant bridges, very beautiful bridges. And if we have to go for span more than 600 meters, we don't have any other option. That's the only option we have. When we are talking about only the cable bridges, including both cable stayed and the suspension bridges, these are opted when large clearance, like sir was talking about, that when large clearance and freeboard is required, we go for cable bridges, and when the channel is deep. And in that case, when the staging and false work is not, we cannot do that, in that case, we go for cable bridges. But sometimes the height of this main tower, that becomes a disadvantage for this kind of bridge. Because if this kind of bridge is gonna build up in areas where airport is nearby, so the height of this tower can be a disadvantage for them. Cable stayed bridges, it is economical for span 100 to 350 meters. It is less costly than suspension bridge and can be quickly constructed in comparison to the cable stayed suspension bridge. In comparison to suspension bridge, it is having straight cables. So they are having more stiffness, thus they are, since they are straight, so they are having better strength. High strength cables in tension leads to economy in material, weight and cost. Mono tower is the slimmest form of cable stayed bridges, and it is the most favorable in terms of aesthetics. And diamond tower is actually considered to be a most complex and slowest in the construction.
This is again a very approximate cost associated with the construction of cable stayed bridges. So foundation roughly cost around 30%, concrete towers around 10 to 15%, and deck, steelwork or concrete, including everything, 30 to 40%. Stay cables around 5 to 10%. This is just a very approximate idea. Okay, so last is other factors. Now, other are also so many factors again. Starting with the traffic studies. So first of all, like in the morning session where DPR was discussed, there it was mentioned कि हमें traffic studies करके सबसे पहले decide किया जाता है कि हमें bridge चाहिए भी या नहीं चाहिए. तो सबसे पहले ट्रैफिक स्टडी की जाएगी उसकी इकोनॉमी देखने के लिए. अब ट्रैफिक स्टडी में हम लोग जनरली क्या क्या देखेंगे कि ट्रैफिक का फोरकास्ट इमीडिएटली आफ्टर ओपनिंग और ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द ब्रिज, ट्रैफिक मिक्स, व्हाट काइंड ऑफ व्हीकल्स आर कमिंग ऑन टू इट, predominant origin or destination of the traffic. So all these studies, all these information will actually help us in deciding what type of bridge we can go for. क्योंकि होता क्या है कि आपको एक फोरकास्ट, एक ट्रैफिक स्टडी जब आप करा रहे हो तो ब्रिज आपने बनाना है, हमने बोला 100 इयर्स के लिए ब्रिज बनेगा, तो 100 इयर्स की ट्रैफिक स्टडी के लिए अगर आप बनाएंगे दैट विल बी वेरी कॉस्टली. सो हमें एक इकोनोमाइज करने के लिए उसे एक पॉइंट पे हमें खुद सोचना पड़ेगा कि अभी ओके आज की डेट में इतना ट्रैफिक है, मे बी आफ्टर एक्स नंबर ऑफ ईयर्स दिस मच ट्रैफिक विल बी देयर. सो अकॉर्डिंगली इस ट्रैफिक स्टडी के बेसिस पे हम उसे इकोनॉमिकल डिज़ाइन एक सजेस्ट करेंगे टाइप ऑफ ब्रिज. साइट ज्योमेट्री कंडीशंस, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. ब्रिज की लेंथ, वर्टिकल क्लियरेंस, हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट, वर्टिकल अलाइनमेंट, clearances above the roadway, all these things actually will also add up in deciding what type of bridge we are going to go. अगर ब्रिज हमारा एक कर्व्ड अलाइनमेंट में है, उस केस में हमें कैसा टाइप ऑफ ब्रिज सेलेक्ट करना चाहिए? कर्व्ड अलाइनमेंट में अगर ब्रिज है तो what are the options with us? Continuous box girders, rightly said. First, it is having a pleasing appearance and it is readily built, I mean it can be readily built, and high torsional resistance. Precast eye girders we will not select because of course curve नहीं दिया जा सकता उससे, लेकिन segmental precast अगर आप दोगे तो little bit curve हम दे सकते हैं, but of course that's not a very good choice I would say. Site geometry dictates how the traffic can be handled during the construction, because construction के time आप कैसे ट्रैफिक को हैंडल करेंगे, that is a very important factor also. जो हम क्विक कंस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं, बहुत सारे congested areas में we end up in only having few options जो कि क्विक कंस्ट्रक्शन हमें अलाउ करे. तो इस तरह से साइट ज्योमेट्री देयर ऑल्सो प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल. सब सरफेस कंडीशंस, जियोटेक्निकल स्टडीज, क्योंकि अल्टीमेटली योर ब्रिज विल बी ऑन फाउंडेशन, सो what type of subsurface conditions are available in that particular site, that also have to be thoroughly studied, and geotechnical studies are need to be done. For example, अगर आपको एक inclined leg frame bridge देना है, तो unless you have your geotechnical study data with you, because उसमें inclined leg है तो दोनों horizontal and vertical component of the forces will be coming. So this condition, the soil strata which is available where the foundation is gonna come, that should be able to take both the components of the force. डिफरेंशियल सेटलमेंट, अगर वहाँ जो स्टडीज़ में अगर हमने देखा कि वहाँ पे डिफरेंशियल सेटलमेंट हो रही है, आई मीन हो सकती है, इस टाइप का स्ट्रेटा है, तो कॉन्टिन्यूस स्पैन ब्रिजेस आर नॉट अप्रोप्रिएट.
ड्रेनेज कंडीशंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमें फॉर द RE walls and all those things. We need to know the drainage conditions as well. Hydrotechnical studies. So again hydrotechnical studies ये हम शायद सुबह से ही डिस्कस कर रहे हैं. ये हाइड्रो टेक्निकल स्टडी डेटा इंक्लूडिंग बेड मटेरियल, cover depth, tidal variation, all these things have to be studied for deciding the type of the bridge. Environmental characteristics, impact on the marine life, wildlife, riverbed, flora and fauna, all these also have to be taken care while we are selecting a type of bridge. For example, like in the morning session, J.K. Goel ji was talking about the impact of building a bridge on the urban development, urban environment. So that also has to be taken care of. Possible impact on the archaeological sites in the vicinity. So if अगर उस एरिया में हमारा कोई एक हिस्टोरिकल बिल्डिंग है तो मे भी ऐसा हो सकता है कि वर्टिकल क्लियरेंस के बेसिस पे हमें 5.5 या 5.5 का क्लियरेंस रखना है, हाइट रखनी है ब्रिज की हमारी, लेकिन वहाँ पर एक हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है तो हमें ये भी इंश्योर करना है कि हमारे ब्रिज ने उसकी साइट को ब्लॉक ना कर दिया हो. सो मे बी हमें उसकी ब्रिज की हाइट बिकॉज ऑफ दैट मॉन्यूमेंट थोड़ा हाई करना पड़े, सो इवन मोर देन द vertical clearance. So all those factors sometimes can play role in selecting different parameters of the bridge. Functional requirements, end of the day it should serve the function for which it is built. Number of lanes based on the traffic volume, of course. Requirement of a sidewalk, median, drainage, snow removal, etc. All these kind of things, if they are required in that particular site, then we have to take care of that. So जैसे कि जो हमारी कोडल प्रोविजंस के हिसाब से सिंगल लेन, टू लेन, मीडियन का विड्थ, नेविगेशनल क्लियरेंस की वैल्यूज़, वर्टिकल क्लियरेंस, ये जो मिनिमम क्राइटेरियाज हमारे कोडल प्रोविजन में मेंशन्ड हैं, वी ऑल्सो हैव टू कीप दीज प्रोविजंस इन आर माइंड. Aesthetics. Aesthetics in the bridge is earlier not very much given importance. अभी लेकिन IRC 5 कोड का जो 8th रिवीजन 2018 आया है उसमें they have laid lot of emphasis on the aesthetics of the bridge. As such हमारे ब्रिज डिज़ाइन में कोई आर्किटेक्ट्स तो नहीं होते हैं, जैसे जनरली मे बी बहुत इंपॉर्टेंट ब्रिजेस लाइक सिग्नेचर ब्रिज में थे जो अभी दिल्ली का सिग्नेचर ब्रिज है, बट जनरली दे आर नॉट देयर. तो वी डिज़ाइन इंजीनियर्स आर दी आर्किटेक्ट्स. तो हमें ऐसा अगली ब्रिज भी नहीं बना देना है, जस्ट बाकी चीज़ों को देखते हुए फैक्टर्स को देखते हुए हमने एक ब्रिज बना दिया, दो इट इज़ सर्विंग ऑल द पर्पस फॉर विच इट वॉज बिल्ड, बट दैट्स जनरली नॉट कंसिडर्ड एज अ गुड टाइप ऑफ सिलेक्शन. मे बी हम लोग उसको पेंट या कुछ लाइट्स लगा के उसका एस्थेटिक्स इम्प्रूव कर सकते हैं, बट एंड ऑफ द डे यू ऑल्सो हैव टू इंश्योर कि वी शुड नॉट डू टू मच ऑफ इट, एंड पेंटिंग एज सच restricts its maintenance. So we also have to keep in mind, unless it is very much important, don't go for it as such, painting the bridge. Frequency and ease of maintenance. Initial cost और maintenance cost को मिला के, like we said, the life cycle cost of the bridge should be minimized. General rule है minimum number of spans, few deck joints and widest spacing in the girders is the most economical option. अगर आप जनरली एक स्पैन रिड्यूस कर देते हो, जैसे सुबह डिस्कस हो रहा था कि आपके इन फोटोग्राफ्स में अगर आप एक स्पैन ही रिड्यूस कर देते हो तो आपकी सब स्ट्रक्चर का पूरा एक वो रिड्यूस हो जाएगा. So you can have the calculations and do, if it is a better design, if it is an economical design, even if you have to go for a different type of bridge, that exercise actually you have to do yourself.
कंक्रीट अच्छा डेक जॉइंट्स में लाइक आई सेड कि डेक जॉइंट्स एक सबसे ज़्यादा मेंटेनेंस कॉस्ट वाला आइटम रहता है. सो अगर हमारे डेक जॉइंट्स मिनिमम हो जाएंगे, फॉर एग्जांपल इन द केस ऑफ इंटीग्रल ब्रिजेस, दैट विल ऑल्सो बी एन इकोनॉमिकल ऑप्शन. Concrete structures, they are having less maintenance in comparison to steel structures. Construction and erection considerations. Construction time ये एक बहुत important factor रहता है type of bridge decide करने के लिए. Methods, construction methods and equipment which are available immediately with the agencies who are actually going to build them. That also becomes a factor to choose a particular type of bridge. Urban areas, prefabricated, precast members are a better option because of time constraint. Segmental construction is preferred because we can go for more span quickly. Then when the local traffic prohibits the erection of conventional falls work, segmental construction facilities, for this we can go for longer spans, hence reduces the piers and reduces the obstruction to the flow of water. And of course they are easier to ship. Okay, so last is bridge foundations. There are two types of foundations, shallow and deep foundations. And shallow is when the depth of the foundation is less than, there is a type mistake. So depth is less than the width, that's the shallow foundation. And deep foundation when the depth is more than the width. Spread and the raft foundation are two types of shallow foundations, and under deep foundation, two types are pile and the well foundation. So let's talk about spread or open foundations. It is generally constructed for the culverts, and when we are having good bearing capacity, good soil bearing capacity, go for spread foundation. And if hard soil is available, 1.5 to 3 meters below the bed level, go for this. And when covering is less, it is a good option to go for open foundation. Raft and mat foundation. It is suitable when the bed consists of different types of soils and the soil bearing capacity is low. Bed of watercourse is having soft clay or silt. And when the hard soil is not available within a reasonable depth, when the bridge loads are heavy, then we have to go for raft foundation. And it is expected that there can be unequal settlements. Pile foundations, deep foundation cannot be laid using open foundation. Load transfer, deep foundations में जो load transfer रहता है वो दो actions से रहेगा, end bearing as well as friction, skin friction. It is pile foundation is cheap and quick, economical and quick in comparison to the well foundations, and it is suitable when extremely delicate soil is there, when high covering is expected and heavy concentrated loads are there. Well foundations, they are suitable for very heavy loads and which the pile foundation is incapable of carrying. Pile foundation की capacity से भी अगर बहुत ज़्यादा loads हैं, then go for well foundation. बहुत ज़्यादा covering expected है उस area में, then go for that. Sandy soil है अगर, then the option, only option left with you is the well foundation. Okay, so and I will end this presentation by saying that maybe selecting a type of bridge, again I would say there are so many factors, but in this lecture I have tried to give you little bit knowledge, little bit about different factors which you can keep in your mind. But end of the day there is no one pinpointed answer for selecting a type of bridge. So it all depends on your knowledge and your experience. So you have to get your hands dirty and experience, design,
see different types, iterate to get an economical type of bridge. So knowledge and experience are actually going to help you decide what type of bridge you can choose. Thank you very much. And if there are any questions. Ma'am, when we should take arch bridge or when we should take girder bridge? In which condition? Arch bridges, if you compare with the girder, they are, I mean, for longer spans, we can use arch bridges. I mean, if you're going to choose arch bridge, you can go for a longer span also. Girder? Yeah. Girder bridge? In Girder. which condition we should take girder bridge? Actually, again, girder bridge, like we discussed in the lecture also, there are different factors, including span length is always one criteria. For girder bridges, then type of girder, if you can specify, PSC, plate, what type of bridge girder is that? Then again, the span length will vary for all those different types also. Thank you very much.